A very good morning, good evening to all the viewers out there. Ladies and gentlemen, आप सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल and a very warm welcome to this beautiful event. Well, let me present to you myself. My name is Yash Bothra. I am going to be your host, your presenter, your entertainer for today's event. It is an incredibly good day to everyone out there. Welcome to a virtual experience of seeing new product launches of Class machines. We are living in an extraordinary times and this calls for extraordinary measures. आप सभी को जैसे कि पता है कि हम आज दो प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठे क्योंकि आगे बढ़ने वाले हैं हम. Accordingly, we have moved from our popular customer interactive product launch events to a virtual experience. We would like to begin this event by giving a sincere thanks to the farming community who did not let the food chain break even in most difficult lockdown period. Keeping in mind that agriculture is perhaps the biggest savior of the planet and that our customers, farmers, contractors and dealers are contributing to the economy. We have resolved to keep bringing technology solutions to make farming easy and more profitable. As most of you are aware, Class is a globally renowned brand from Germany since the year 1930. In its long 107 years history, it has demonstrated German engineering strength to make superior products for various agri-machinery markets around the world. Next year, Class will complete 30 years of presence in India, Sri Lanka, Bangladesh and Nepal. It is known for its premium products and technological leadership and, of course, its long-term commitment to improving farming efficiency. What makes a Class product a favorite is its reliability, durability and excellent performance, along with unmatchable after-sale supports. The purpose of today's launch is to showcase some exciting new products for our farmers. आप सभी farmers के लिए हम एक exciting नए product की तैयारी करके आपके लिए लेके आए हैं, तो कृपया करके दिल थाम के बैठे. Mr. Jai Singh leads the sales entity of Class in India and is responsible for sales, marketing and distribution of locally manufactured and import products of Class in India and other SAARC countries. He carries with him 30 years of experience in the field of infrastructure and agricultural equipment and has comprehensive knowledge of the commercial and economic aspects of doing business in Asia Pacific. Let's call upon Mr. Jai Singh with a big round of applause. Good morning, good afternoon, Namaste. My name is Jai Singh. मेरा नाम Jai Singh है. I am the Managing Director of Class Agriculture Machinery in India. Today I am going to talk to you about the story of Class. Class was founded many years back. In 1913, Mr. August Class, along with two of his friends, sat down at a small street corner and then the friends decided to build a tractor. 1913 में मिस्टर ऑगस्ट क्लास अपने दो दोस्तों के साथ एक शहर में एक जगह बैठ करके एक ट्रैक्टर बनाने की उन्होंने सोची और वहाँ से शुरू हुई हमारी जर्नी. 107 years later, we are spread in 150 countries with 11 manufacturing stations across the world. इस 107 साल की जर्नी में हमारे 150 देशों में प्रेजेंस है और 11 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज हैं जहाँ से हम बहुत उम्दा प्रोडक्ट्स बनाते हैं. In India, Class came 30 years back. So in some months we will be 30-year-old in the country. 30 साल पहले Class जब आई इंडिया में तो हमने पहली बार पैडी हार्वेस्टिंग को मैकेनाइज्ड तरीके से हार्वेस्ट किया. We were the first and we take pride in that to mechanically harvest paddy in South India. From then the journey started and we launched combine harvesters, we brought in forage harvesters, we brought in balers, we brought in mowers, we brought in transplanters. कई तरह की मशीन हम उसके बाद से लाए. combine harvester, cattle fodder के लिए forage harvester,
स्ट्रॉ की बेल बनाने के लिए बेलर, पैडी ट्रांसप्लांटेशन के लिए ट्रांसप्लांटर, घास काटने के लिए मोवर और कई तरह के प्रोडक्ट्स। In this time, we have now presence in almost all the states with 80 dealers spread across not just in India but also in Sri Lanka, Bangladesh and Nepal. With 80 dealers, we are now presenting to you another new machine and I'll talk about that in a minute. So हमारे 80 डीलर जो कि इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और नेपाल में हैं, ये हमारे लिए मशीन बेचते हैं, उसको सर्विस करते हैं, उनके लिए पार्ट्स रखते हैं। In India, we also have 4 parts locations. In these 4 locations, we hold more than 25 crores worth of parts. Our dealers also hold as much value of parts, only so that you get your parts quickly. इन 4 लोकेशन में जहाँ की हम पार्ट्स वेयरहाउस है हमारे, उनमें 25 करोड़ से ऊपर के अमाउंट का पार्ट्स हमारे पास किसी भी वक्त रहता है और उतना ही अमाउंट का पार्ट्स हमारे डिस्ट्रीब्यूटर में फैला हुआ है। टोटल 50 करोड़ के पार्ट से हम आपको सर्विस देते हैं कई तरह की मशीनों के बारे में। Today I am going to talk about MARKANT 650. MARKANT is a very popular series world over and in India of a compact straw baler. उससे आप कॉर्न स्टोर भी कर सकते हैं, उससे आप शुगर केन वेस्ट को भी आप स्ट्रॉ उसको बेल बना सकते हैं। So this MARKANT baler is actually one of the series which is very popular in the world and it is used for straw baling of paddy straw, of sugar cane as well as corn waste. The model that we are launching today is called the MARKANT 650. ये मॉडल, इसका नाम MARKANT 650 है और ये तीसरा बेलर है जो इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा। This is the third baler, the MARKANT 650, that's going to be launched in India. We had the MARKANT 65, we had the MARKANT 55 and now the very new MARKANT 650 जो कि हम अपने किसी क्लास के प्लांट से ही इंपोर्ट करते हैं इंडिया में। ये मशीन, इसके बारे में जो जानकारी होगी ये हमारे साथी आपको कुछ देर में देंगे। My colleagues are here to talk to you about this new product MARKANT 650 which is third in the series after MARKANT 65, 55 and now this particular one. So please enjoy the journey and my colleagues will also talk to you about why you should buy this machine, where will you get service, where will you get parts and why is it better than what you see from the other manufacturers. Thank you very much. Thank you, Mr. Jaisingh. It was our pleasure listening to you and learning from you. Mr. Anil Menon is Head of Market Development at Class in India and is responsible for marketing, network development and product management for India and other SAARC countries. He is also responsible for product management for Class in Southeast Asia. Mr. Prem Kumar is Head of Sales for Class Operations in India and other SAARC nations. He has tremendous experience of over 2 decades in India's agricultural machinery industry. Let's call upon Mr. Prem. Now, I would like to invite Mr. Jaisingh once again to unveil this new exciting product.
Now, let's find out what's inside the product. May I call upon Mr. Anil Menon to tell us more about the MARKANT 650. Hello, I'm Anil Menon, responsible for market development for class agricultural machinery in India. Before we get into a discussion of the MARKANT 650, let's spend a few minutes to understand what a baler is and what is baling, just for the benefit of some of you who may be new to this concept. Traditionally in India, we used to collect biomass like paddy straw, manually, transport it in a loose manner, and then also store it in the loose manner. MARKANT 650 के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बेलिंग और बेलर के बारे में दो सेंटेंस बताना चाहता था। ट्रेडिशनली इंडिया में हम पैडी स्ट्रॉ, कॉर्न स्टोवर, शुगरकेन ट्रैश जैसी चीज़ों को मैन्युअली इकट्ठा करते थे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करके स्टोरेज भी लूज फॉर्म में होता था। दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव proposition on a per ton basis. When you use a baler, the same thing is achieved in a much more professional, effective and cost-efficient manner. The baler collects the straw, compresses it and puts it into bundles called bales. This can then be transported more effectively, stored more effectively, and it's also cheaper on a per ton basis. तो बेलर क्या करता है, पैडी स्ट्रॉ को या शुगर केन के थ्रैश को या कॉर्न स्टोवर जो बचा रहता है उसको मैकेनिकली इकट्ठा करके बंडल्स बनाता है जिसको हम बेल्स बोलते हैं। इसको कंप्रेस करके गांठ बांध के इट इज़ अवेलेबल इन वेरी compact form, which makes it easy for transportation and storage. MARKANT range of balers has been around in India for about 30 years now. We started around 1990 in India, 1990s, and it was first used for the baling of paddy straw, and later it also started getting used in sugarcane trash and corn stover. And this would be the latest generation of this range of MARKANT balers, the MARKANT 650. तो MARKANT 55 बेलर, MARKANT 65 बेलर, ये जो मॉडल्स है इंडिया में 1990 करीब 30 साल पहले से है, और किसान, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह इनको पैडी स्ट्रॉ बेलिंग के लिए, कॉर्न स्टोवर के लिए, शुगरकेन ट्रैश के लिए यूज़ करते थे। और इसी बेलर का, MARKANT रेंज का नया जो जनरेशन है, MARKANT 650, हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है। Now let's come to the MARKANT 650 baler itself. Let's get into the specifics, something you've been waiting for. The MARKANT 650 is driven by a tractor of about 50 horsepower. It's the power of the tractor from the PTO shaft is conveyed to the baler through a drive shaft. तो MARKANT 650 baler जो है वो करीब 50 horsepower ट्रैक्टर के साथ चलाया जाता है, और ट्रैक्टर PTO से पावर बेलर तक ड्राइव शाफ्ट के थ्रू कन्वे किया जाता है। A very important aspect about the drawbar of the MARKANT 650 is the pivoted drawbar, something that is not seen in other balers in this segment. What does a pivoted drawbar do? How does it benefit the operator? By virtue of the pivot, a pivoted drawbar gives the tractor baler combination a much lower turning radius. This makes it very highly maneuverable in small field conditions, something that is very relevant to farms and Indian conditions. तो जो MARKANT 650 है उसका पिवटेड ड्रॉबार होता है, और पिवटेड ड्रॉबार में पिवट की वजह से टर्निंग रेडियस कम होता है, और इसकी वजह से आपका जो मैन्यूवरेबिलिटी है, जो क्षमता है छोटे फील्ड्स में टर्न करने का, वो बहुत बेहतर होता है। और ये फीचर जो है दूसरे बेलर्स इस सेगमेंट में नहीं देखा जाता है। There is another advantage to the pivoted drawbar of the MARKANT 650. The drawbar is connected to the lower links of the tractor, and when the operator wants to move from one field to another, and in some cases you have high bunds or partitions, then he can lift the drawbar using the tractor hydraulics and move over to the other side. This makes it much more convenient because in a regular drawbar this is not possible. तो pivoted drawbar का एक और advantage ये है कि चूंकि pivoted drawbar लोअर लिंक से अटैच होता है ट्रैक्टर का,
जब ऑपरेटर को एक खेत से दूसरा खेत जाना होता है और जो बंड्स है, जो पार्टीशन है, वो हाई होता है कभी कभी, तो ऑपरेटर ट्रैक्टर हाइड्रोलिक से बेलर का फ्रंट जो है उठा सकता है एंड ईजिली दूसरे खेत तक क्रॉस किया जा सकता है। ये जो फीचर है ये इस सेगमेंट के दूसरे बेलर्स में नहीं देखा जाता है, एटलीस्ट इन द इंडियन मार्केट। द फर्स्ट part of the baler that touches the straw is called the pickup. So let's look at the baler in the direction of movement of crop residue. The pickup of the MARKANT 650 is about 1.85 meters in working width. It's supported by a suspension spring and it's also provided with a guide wheel or a pickup wheel. तो pickup का width जो है वो 1.85 meters है और पिकअप को सपोर्ट करने के लिए सस्पेंशन स्प्रिंग्स भी है और साथ साथ एक गाइड व्हील प्रोवाइड किया जाता है। द गाइड व्हील हेल्प्स बिकॉज इट इंश्योर्स दैट द पिकअप follows the contour of the field, and this is important for high efficiency of raking. Nothing much is left behind, not much of paddy straw or other residues left behind if you can ensure that the pickup follows the contour of the field. So guide wheel का यूज़ मेजर एडवांटेज ये है कि आपका जो पिकअप है वो स्लोप्स पे भी क्लियरली फॉलो करता है फील्ड को, और जितने आपका स्ट्रॉ है या क्रॉप रेसिड्यू है वो पिकअप हो जाता है और एफिशिएंसी ऑफ पिकिंग इज मच हायर. Pickup is hydraulically lifted. You can adjust the height of the pickup hydraulically, so the operator can do that from the tractor driver can do that sitting on the seat, and that's a much more convenient way of adjusting height than a manual adjustment. So pickup hydraulically operated होता है और ये ट्रैक्टर ड्राइवर सीट पे बैठ के कर सकता है. So now let's move with the direction of the crop flow. The next part of the baler where the straw reaches is the feeding chamber. The MARKANT 650 has a robust feeding chamber. There are two feeders on which we have tines protected by safety bolts. And the job of the feeding system is to drive the straw that comes in from the pickup into the final chamber, which is the baling chamber. So this is a critical aspect, because if the feeding system is designed for high throughput, and if the feeding is regular, and if the straw flow is regular, then you have very good bale quality, bale shape in the final baling chamber, and it also helps in proper compression. तो MARKANT 650 में नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है फीडिंग चेंबर के बारे में. पिकअप से जाके नेक्स्ट क्रॉप या स्ट्रॉ जो है वो फीडिंग चेंबर में जाता है. MARKANT 650 में एक रोबस्ट फीडिंग चेंबर है हाई थ्रूपुट के लिए, और उसमें जो दो फीडर्स है जिसके साथ टाइन्स जुड़ा रहता है, प्रोटेक्टेड बाय शेयर बोल्ट, सेफ्टी बोल्ट्स. और फीडिंग सिस्टम का जो रोल है, जो फंक्शन है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसका अगर थ्रूपुट और यूनिफॉर्म फीडिंग बेहतर होता है तो फाइनली जो आपका शेप है बेल का, जो आपका डेंसिटी है बेलिंग चेंबर में जो फाइनली बनता है, दैट विल बी परफेक्ट. नाउ लेट्स मूव इन टू द हार्ट ऑफ द बेलर, which is the bale chamber. So the MARKANT 650 has a cross-sectional, has a rectangular cross-section with a width of about 47 centimeters and a height of 37 centimeters. And the plunger that actually does the final compression delivers about 93 strokes per minute. तो अभी चलते हैं MARKANT 650 के जो बेल चेंबर है, जो हार्ट है, उसकी तरफ. तो MARKANT 650 का जो बेल चेंबर है वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में होता है, जिसका विड्थ है 47 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 37 सेंटीमीटर्स. एंड जो फाइनली जो कंप्रेशन होता है बेल चेंबर में वो प्लंजर की वजह से होता है, और MARKANT 650 में 93 स्ट्रोक्स पर मिनट होता है जो प्लंजर का जो स्ट्रोकिंग रेट. This chamber or this MARKANT 650 allows for two adjustments that can be made within the bale chamber. One is the length of the bale and the other is the density of the bale.
So you can adjust the length of the bale to vary from 40 to 110 centimeters, and the density can be adjusted by moving in pressure plates on the lateral sides or on the top of the bale chamber. The more you move it in, the higher the density of the bale, and the actual density would of course depend upon the kind of crop residue. तो नेक्स्ट जो हमें बताना है मार्कन 650 के बारे में वो ये है कि आप दो एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पर बेल के ऊपर। एक है लेंथ बेल का जो कि आप 40 से 110 सेंटीमीटर्स तक एडजस्ट करते हैं, और दूसरा जो है वो डेंसिटी है। आप प्रेशर प्लेट्स जो साइड और टॉप में हैं इसको मूव करके आप डेंसिटी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। एक्चुअल डेंसिटी जो है वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये बेल चेंबर, द डिज़ाइन ऑफ दिस बेल चेंबर इज़ क्रूशियल, एंड द डिज़ाइन ऑफ द फ्रंट सर्फेस ऑफ द plunger is crucial to give a final shape and high density to the bale. So the MARKANT 650, in fact the entire range of MARKANT balers is known for its high density bales and also bales with very good shape, sharp edges that stays like that. So that is a function of the design of this bale chamber. तो बेल चेंबर के डिज़ाइन की वजह से MARKANT 650 से जो बेल्स बनता है वो बहुत ही हाई डेंसिटी के होते हैं और उसका शेप भी परफेक्ट होता है और काफ़ी टाइम तक एज अ बेल वो बरकरार रहता है, सेफ रहता है। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बेलिंग फंक्शन। वी हैव अ बेल रेडी, नाउ वी नीड टू टाई अ twine around it and then knot it. In the MARKANT 650 we have two knotters, the legendary class knotters with a patent in 1921, which has set the highest standards in the industry on reliability and long life. The average weight of the bale is about 20 to 25 kg, but that depends upon the crop residue that is being baled. And there's also a bale counter with which the operator can see how many bales he's made during a working day, and it's also possible to reset it. तो हम अभी फाइनल जो बेलिंग का जो प्रोसेस है उस पे आते हैं। बेल बना हुआ है, उसके ऊपर एक ट्वाइन बांधना होता है एंड नॉट करना होता है। MARKANT 650 में दो नॉटर्स है और साथ साथ बेल काउंटर भी है, जिससे ऑपरेटर को पता चलता है कि एक दिन में कितने बेल्स हुए हैं, और ये बेल काउंटर रीसेट भी हो सकता है। एवरेज जो बेल वेट है वो करीब 20 से 25 kg का होता है, लेकिन ये वेरी करता है क्रॉप रेसिड्यू के ऊपर या बेलिंग कंडीशन के ऊपर। So no discussion of the MARKANT 650 is complete without a mention of the drives, because among the many differentiating factors between balers in the segment, I think the drives come right on top. So you have, for the pickup, you have a chain and sprocket drive mechanism with a slip clutch, and the drive to the knotter and the feeding system is given by a solid shaft. This arrangement is far superior to the option of a belt and pulley or a combination of a belt and pulley and chain and sprocket. This is what defines the MARKANT 650 in terms of its productivity, robustness and long life. So MARKANT 650 में जो फाइनली हम बात करने वाले हैं वो है ड्राइव्स के बारे में, एंड जो पिकअप है MARKANT 650 का उसको ड्राइव दिया जाता है चेन एंड स्प्रॉकेट अरेंजमेंट से, और एक स्लिप क्लच भी है ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए। स्लिप क्लच प्रोटेक्ट करता है पिकअप को, और जो ड्राइव है नॉटर मैकेनिज्म, और जो फीडिंग मैकेनिज्म के लिए जो ड्राइव है वो सॉलिड शाफ्ट से दिया जाता है। और ये जो फैक्टर है ये दूसरे ड्राइव से, जैसे बेल्ट एंड पुली या बेल्ट एंड पुली और स्लिप क्लच का जो बेल्ट एंड पुली एंड चेन एंड स्प्रॉकेट का जो कॉम्बिनेशन है उस ड्राइव से बेहतर माना जाता है। और MARKANT 650 का जो प्रोडक्टिविटी है या जो मजबूती है या जो लाइफ है वो इस ड्राइव से मिलता है, और ये एक बेंचमार्क है इंडस्ट्री में। सो दिस also defines why the MARKANT 650 or the MARKANT range of balers have been around in India now for close to 3 decades. We've been having a success story with the MARKANT range of balers in India right from the 1990s,
and with the features and benefits that I just spoke about, we are absolutely certain that this success will continue into the future. Thank you once again, Mr. Anil Menon, for explaining the product in simple, understandable terms. As a customer of baling contractor, you would be keen to know how does this machine make profitable business sense. आप जानना चाहते होंगे ना कि ये प्रॉफिट कैसे देगा आपको. Let us hear from Mr. Prem Kumar what he has to tell how to make a good profit from this machine. Namaskar, my name is Prem Kumar. I am responsible for sales for Claas Agriculture Machineries in India, Sri Lanka, Nepal and Bangladesh. Claas is a 107-year-old company worldwide, whereas in India we are 30-year-old. We have our factory in Morinda, which is near to Chandigarh. I am happy to share that we are the first to introduce mechanized harvesting in India. मुझे गर्व होता है बताते हुए कि हिंदुस्तान में सबसे पहले मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग क्लास ने शुरू किया था. क्लास मशीन्स आर नोन एंड आर फेमस फॉर गुड क्वालिटी ग्रेन एंड लेस ग्रेन डैमेज और ग्रेन लॉस. क्लास मशीन से जब हार्वेस्टिंग होता है तो ग्रेन डैमेज हो या ग्रेन लॉस बहुत कम होता है बाकी और कंबाइन हार्वेस्टर्स को अगर आप कंपेयर करते हैं तो. वी हैव ओवर 80 डीलर्स अक्रॉस इंडिया, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, and around 150 sales advisors at the dealerships to assist our farmers or customers to advise them. हमारे 80 डीलर्स हैं इंडिया में या श्रीलंका, नेपाल या बांग्लादेश में और उनके पास 150 सेल्स के लोग हैं जो हमारे कस्टमर्स को एडवाइस करने के लिए हमेशा रहते हैं. और जब आफ्टर मार्केट की बात करते हैं तो वी आर ए क्लास अपार्ट. हम औरों से हटके हैं. वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? वी हैव अराउंड 270 कंपनी ट्रेंड मैकेनिक्स एट आवर डीलरशिप. हमारे डीलरशिप्स में 270 से ज़्यादा कंपनी ट्रेंड मैकेनिक्स हैं जो 24 घंटे हमारे फार्मर्स या कस्टमर को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं. Our 270 trained mechanics are always ready to help my farmers or our customers 24/7 so that our customers are happy. हमारे कस्टमर्स को हैप्पी करने के लिए हमारे मैकेनिक्स, ट्रेंड मैकेनिक्स हमेशा तत्पर रहते हैं. इससे हटके हमारे कंपनी में बेंगलोर में हमने 25 करोड़ रुपए का पार्ट स्टॉकिंग किया है. वी आर स्टॉक्ड अराउंड 25 करोड़ ऑफ पार्ट्स एट आवर बेंगलोर ऑफिस और हमारे डीलरशिप्स में करीब 25 करोड़ के पार्ट्स रखे हैं कस्टमर को सर्व करने के लिए. अराउंड 25 करोड़ ऑफ पार्ट्स ई स्टॉक्ड एट आवर डीलरशिप अक्रॉस इंडिया. अपार्ट फ्रॉम कंबाइन हार्वेस्टर्स वी हैव अदर प्रोडक्ट्स टू इन इंडिया. कंबाइन हार्वेस्टर से हटके काफ़ी और भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास इंडिया में. अभी मैं बात करूंगा मार्केंट 650 के बारे में. मार्केंट 650 कैन बी यूज्ड टू बेल पैडी, स्ट्रॉ, शुगर केन ट्रैश. मार्केंट 650 से हम धान और शुगर केन ट्रैश का हम बेल बना सकते हैं. अगर हम मार्केंट 650 के प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो मार्केंट 650 से 1 घंटे में 100 से ज़्यादा बेल्स हम पैडी में बना सकते हैं. ये अगर हम कंपेयर करेंगे और रेक्टेंगुलर बेलर से 20% ज़्यादा है. व्हेन वी कंपेयर आवर बेलर क्लास मार्केंट 650 बेलर विथ अदर रेक्टेंगुलर बेलर्स, आवर प्रोडक्टिविटी इज़ 20% मोर. नाउ आई वांट टू थैंक ऑल माई 8000 लॉयल कस्टमर्स, माई डीलर्स अक्रॉस इंडिया, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश. मैं मेरे सारे लॉयल जो कस्टमर्स हैं 8000 कस्टमर्स उनको मैं धन्यवाद देता हूँ. मेरे डीलर्स जो कि इंडिया में हैं, नेपाल में हैं या बांग्लादेश में या श्रीलंका में, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स in each and every state and my retail financiers who supported my company, my customers and to grow.
Thank you very much, Mr. Prem Kumar. What we have seen and heard in the last few minutes reconfirms that class will continue to be at the forefront of technology to help farmers improve operational efficiency and make profits. Ladies and gentlemen, it is now our privilege to invite Dr. Jens Uyding, President of Asia Sales Region. As President of Asia Sales Region, Dr. Jens Uyding leads all sales operations for one of the 6 global regions of CLAS. He is a board member of the CLAS Agricultural Machinery Private Limited, India. Namaste and hello from Germany. Dear customers, dealers, colleagues and friends in India, my name is Jens Uyding. I am heading the sales region Asia for CLAS. Today, I'm speaking to you from our head office in Hasewinkel. Although I would honestly love to be with you in person today, but the worldwide pandemic forces me to stay here. Today, we are launching the latest range of balers in India. And this marks an important milestone for us and for the Indian farming community. But before I talk about these new balers, please allow me some words about CLAS. CLAS is a family-owned agribusiness company, and we have a legacy of more than 100 years. CLAS was founded by Mr. August CLAS in the year 1913. And today, more than 100 years later, the company is headed by the 3rd generation, Mrs. Katrina CLAS. With more than 11,000 employees, we generate a global turnover of approximately 4 billion euro. Our customers consider us to be the leading brand for harvesting solutions, which made us the #1 combine harvest manufacturer in many countries around the globe. When CLAS entered India in 1992, we were also a harvesting pioneer. Back then, our crop tiger revolutionized the rice harvest, in particular in South India, and providing farmers with an efficient harvesting solution and generating income for a new generation of harvesting contractors. This plaque marks the occasion of our 25th anniversary in India a few years ago, when Mrs. CLAS was with us on this auspicious occasion. Since then, we moved on. We invested in R&D to understand the local needs and requirements, and step by step, we expanded our product range in India. Today, CLAS offers a full range of harvesting solutions, which are all tailored to the Indian conditions, such as our famous Crop Tiger multi-crop harvester on wheel and on railway tracks, forage harvesters in all kinds of sizes, from the tractor-mounted Jaguar 25 to the mighty Jaguar 850 with 450 horsepower, and hay and straw management solutions, which I'm going to talk about now. Straw is a valuable resource with many agricultural and non-agricultural uses. Burning it on the field is causing huge environmental impact and is banned for good reasons in many places already. Straw collection requires efficient and reliable machinery. Many of you may not know that the CLAS legacy actually started with straw collection. The first ever product made by CLAS in 1913 was a so-called straw binder, which is a predecessor of today's baler.
It was an invention by Mr. August Klaas, and it was him who patented the first ever knotter, which makes sure that the bales stay together. This knotter is even today a key component of every baler. Today, Klaas is the only company that develops and manufactures these knotters in-house, which greatly contributes to the reliability of our balers. Today, we are proud to launch the latest range of high-density baling technology in India, the MARKANT 650. The MARKANT baler series dates back many years, and 10,000s of these bales of different generations have made this name famous in the worldwide farming community since then. In many markets, the name MARKANT has even become synonymous for a reliable, small, high-density baler. I'm happy that this is even the case in India, where so many MARKANT can be seen in operation since many years. With this latest generation MARKANT that we are launching today, we have further increased its sturdiness and reliability. Please join me in the following exciting presentations to learn more about this great product. Thank you and all the best from Germany. Bye-bye. मैं हरदीप सिंह पिंड सठियाड़ा तहसील बाबा बकाला ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੇਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਲਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਿਕਅਪ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜੈਕ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਕਅਪ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਪਿਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬੈਰਿੰਗ ਪਾਤੇ ਨੇ, ਥੱਲੇੋਂ ਲੱਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫੀਡਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਸਟਨ ਤੱਕ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੀ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਜੂਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਠ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ, ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਠ ਟਾਈਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਟਨ ਵਾਲਾ ਗੇਅਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੇਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਆਪਾਂ 50 ਤੋਂ 55 HP ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਊਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲਰ ਵੀ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਤਕਨੀਕ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ ਜੀ। This has indeed been an invigorating and enlightening session for all of us. And on behalf of entire audience, may I thank all the speakers and everybody who took their effort for arranging this event. Before we close, may I ask Mr. Jai Singh to please come back on the stage and give us a closing remark. Hello, I'm back. I hope you enjoyed the journey of the launch of MARKANT 650. And I hope my colleagues have been able to answer all your questions about what is good about this product, where to get service from, and where to get parts from for these machines. मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे colleagues जो आपसे बात किए, आपको इस मशीन के बारे में पूरी जानकारी दिए हैं, कहाँ से सर्विस, कहाँ से पार्ट्स मिलेगा, इसके बारे में भी आपको पता है। अब आपको यही काम है कि आप सबसे नज़दीकी डीलर के पास जाकर के इसकी इंक्वायरी करें। हमारे पास रेडी स्टॉक है मशीन की, एंड आई प्रॉमिस टू यू अ वेरी वेरी गुड बेलिंग प्रोसेस इन द डेज फॉरवर्ड। आपसे मैं फिर गुजारिश करूंगा ये
कि पैडी सीज़न हार्वेस्टिंग आने वाली है और 1.5 महीने के बाद आपको जब बेलिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो आप इस मशीन से जो उम्मीद करते हैं ये आपको मशीन देगी. टुगेदर let us make our environment healthy, because this machine prevents and helps in keeping the straw, preventing it from getting burnt, turning that into a fuel for biogas based power plants. आपके साथ मिल करके हम पर्यावरण के लिए की रक्षा करेंगे और साथ में मिल करके इन बेल्स को जो कि अदरवाइज जला दिए जाते हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे एज अ फ्यूल जो कि ये बायोगैस प्लांट में जाएंगी. हम और आपके साथ मिल करके चलिए ये जर्नी पे आगे बढ़ें. धन्यवाद. Thank you once again, Mr. Jai Singh, for those inspiring words. We do hope that you will like the new product that we launched today. आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा नया प्रोडक्ट आज पसंद आया होगा. Please contact our nearest dealer or call Class Care at 1-800-425-25227. Let me get that again. 1-800-425-25227. You can also visit our website, that is www.caas.co.in to get more details. Do remember to visit and like our official Class India Facebook page. You will find many interesting videos, customer testimonials, interviews at our YouTube channel by just typing CLAAS India in the search tab. Also, at the end, please do note the details of our networking zone and make sure you use the toll-free number. If you want to provide any kind of feedback for this particular event, please do feel free and reach us back on the toll-free number or on the email ID, that is marketing.india@claas.com. Ladies and gentlemen, it was my pleasure hosting this event. Well, I would like to sign off. My name is Yash Bothra. Thank you so much.